कोची, एक ऐसी जगह जिसे इतिहास की सदियों पुरानी कहानियों ने आकार दिया है। यहाँ के खूबसूरत चर्चेस से लेकर फोर्ट कोची की गलियाँ आपको पुराने दिनों में ले जाती हैं। लेकिन कोची सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है। यहाँ के सीरीन बीचेस और अरेबियन सी की हवा इस शहर को अलग ही सुकून देती है। और फिर आती है यहाँ की रिच कल्चर। कलरीपट्टू और कथकली के रूप में कोची अपनी परंपराओं को आज भी जिंदा रखता है। ये शहर सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है जो धीरे धीरे आपके दिल में घर कर जाता है। वेलकम टू कोची। Hi guys, welcome back to my channel and we are in Kochi. Yes, so if you have followed my previous vlog, you know that we traveled from Bangalore to Kochi via road and today we have reached to Kochi at around 4 PM और अभी बज रहे हैं 5 o'clock। कल के दिन भी हम कोची में हैं तो हम पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं कोची को। एंड इन दिस वीडियो आई विल कवर ऑल द आइटिनरी एंड द डिटेल्स ऑफ कोची एंड व्हाट वी कैन डू इन कोची। एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। मैं क्विकली अपडेट हूँ आपको, मैं अभी लिफ्ट में हूँ। सो वी आर गोइंग टू कथकली सेंटर, उसका मैं एड्रेस दे दूंगी आपको। सो फॉर आइदर विल गो फॉर कथकली शो और एल्स फॉर मार्शल आर्ट शो। लेट्स सी क्या अवेलेबल है अभी। हम लोग पहुँच गए हैं ग्रेट केवी कथकली सेंटर में। जस्ट लेट्स सी टिकट्स है कि नहीं। We got Kathakali show ticket as well as martial arts ticket. Kathakali show has just started, so and after that we have the martial arts show as well. Let's go inside. Study place. Traditionally, we call for the Kalari. Fight means fighting. So, full form of the Kalari fight, school of fighting. The martial originally more than 5,000 years history. Our Indian epics like Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Purana, all telling about this kind of martial. Around 500 years ago, each village of Maharajas of Kerala, they have army to teach this kind of martial. Since 7 years, boys and girls must to learning this kind of martial. Body fitness, self protection and country protection. That is the reason this martial coming very famous in Kerala. Next up is addition, single bombastic bomb up. Nowadays putting the two knife both sides. More than 3 people like us come in very protection of the body. Other thing, the traditional people very good the inside the forest. Some animal attacks protection. They're putting the fireboards both sides and surrounding the whole of the body. Never any animals attacks in the body. Nowadays using for the body flexibility, chest and arms. You can enjoy single bombastic bomb of Kerala martial. Knife fighting. Knife is real knife. No wood, no plastic. When the miss the block, it will be cut any part. You can enjoy knife fighting of Kerala martial. So we are done with both of our shows, Kathakali and martial arts show. काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग शो था।
Okay, so we'll call it a day now and we'll see you tomorrow. Hello guys, welcome back and good morning. This is day 2 of Kochi and आज हम कोची एक्सप्लोर करने जाएंगे and I will show you everything that you can explore in Kochi in one day of time. Before that, let me give you a room tour. So, this is where we are staying in Kochi. So this is how the room looks. So here, this is the entry and you have a table over here with the mirror. And then you have like one king size bed and एक single bed. And यहाँ पे सारे आपके cupboards and you have the TV and all. So काफ़ी बड़ा room है. If you see the space between the bed and the table, so you will understand. And यहाँ पे this is the washroom. So कोची में दो मेन एरिया हैं जहाँ पे जनरली लोग रहते हैं. एक है फोर्ट कोची और दूसरा है एर्नाकुलम एरिया. So we are staying in Ernakulam area. So the plan right now is to go to Fort Kochi area. We are in Ernakulam area, but most of the places to visit are in the Fort Kochi area. So we will go there and then we will plan the next itinerary. Suenan los tambores. Ajá. Escucha ahora, el tambor te llama y están llamando con sentimiento y manana y están llegando. So we are currently at Santa Cruz Cathedral Basilica. इसको बिल्ड किया गया था बाय पोर्तुगीज इन 1505, मोर देन 500 ईयर्स पहले. और उसके बाद जब ब्रिटिश आए इन 1795 दे डेमोलिश्ड इट एंड इन 1887 इट वाज अगेन रिकमिशन्ड. So it is very famous and popular for its architecture. Is having a Indo-European and Gothic architecture. तो हमारा अगला स्पॉट है सेंट फ्रांसिस चर्च. तो सेंट फ्रांसिस चर्च सिर्फ 350-450 मीटर अवे है फ्रॉम सेंटा क्रूज कैथेड्रल बेसिलिका. सो यू कैन जस्ट वॉक फ्रॉम द सेंटा क्रूज कैथेड्रल बेसिलिका टू सेंट फ्रांसिस चर्च. So I'm currently in front of St. Francis Church. St. Francis Church is one of the oldest European churches in India. ये built किया गया था 1503 में by the Portuguese sailors and explorers who came to India. And like माना जाता है कि that time that it was built with only wood. And later in 1516 AD ये stone से इसको बनाया गया. And the great Portuguese explorer Vasco da Gama, he died in 1526 AD when he was visiting third time to India. तो उनका body यहाँ पे पहले bury किया गया था in this church, and after 14 years his remains were relocated to Lisbon.
So currently we are in Bastion Bungalow. Bastion Bungalow 1667 में built हुआ था by Duchess, and it is built on a old fort bastion. That is how its name came. And currently this is under archaeology department. एंड यहाँ पे एक म्यूजियम ओपन किया गया है, तो वहाँ पे आप कोची के पास्ट लाइक द कॉलोनियल हिस्ट्री एंड एवरीथिंग यू कैन सी इन द फोटोग्राफ्स. एंड द लाइक द बंगलो आर्किटेक्चर इज वेरी ओल्ड यूरोपियन आर्किटेक्चर एंड इट रियली टेक्स यू बैक इन टाइम. Inside Bastion Bungalow, you'll find old photographs, maps, and documents that show how the city has evolved over time. There are also exhibits related to Fort Kochi's maritime history and the different communities that once lived here. And as you walk through these displays, you also get a glimpse into Kochi's layered history, from the Portuguese who first arrived here to the Dutch and later the British, each leaving behind their own influence on the city. It all comes together to show how Kochi became the place it is today. So there are many beautiful cafes in Fort Kochi area, and we found this quaint little cafe in Fort Kochi, and this is called the Loafers Cafe. This cafe gives you such great view of the street that you just want to keep sipping your coffee and keep looking out of that window. नेक्स्ट हमारा स्पॉट होने वाला है ऑफ द डे फोर्ट कोची बीच. सो लेट्स गो टुवर्ड्स इट. यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इट्स अराउंड 650 मीटर ओनली. तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं फोर्ट कोची बीच, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेच वॉक करना पड़ेगा फॉर गोइंग टू द मेन पार्ट, जहाँ पे चाइनीज़ फिशिंग नेट्स, जो कि मेजर अट्रैक्शन है फोर्ट कोची बीच में, उसके लिए. एंड दिस बीच इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल. दूर में आपको शिप नज़र आ रही है, एंड यू हैव दिस नेचुरल गैस स्टोरेज जो कि दूर से आपको नज़र आ रहा है. एंड यहाँ पे रॉक्स लगाए हुए हैं बाउंड्री में, और यहाँ पे पूरा पाथवे बनाया हुआ है अलॉन्ग साइड द बीच. यहाँ पे पूरा टाइल्स लगाया हुआ है ग्रेनाइट का. इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल. यू कैन जस्ट एन्जॉय हेयर. मॉर्निंग में या इवनिंग में और भी सुंदर लगता है व्हेन इट इज़ अ सनराइज और सन इज सेटिंग, एंड इट्स लुक्स रियली प्रिस्टीन एट दैट टाइम. तो मेरे पीछे जो बैम्बू स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं चाइनीज़ फिशिंग नेट. तो माना जाता है कि 1350 से 1450 एडी के बीच में इन्हें चाइनीज़ ट्रेडर्स जो यहाँ पे कोची में ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. एंड कहा जाता है कि एक्सप्लोरर जिंग ही जो हैं, जो चाइनीज़ एक्सप्लोरर हैं, उन्होंने इन्हें यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया. उन्होंने अपनी चाइनीज़ फिशिंग टेक्निक्स को कोची के पीपल के साथ में शेयर किया. एंड देन फ्रॉम दैट टाइम these Chinese fishing nets are an integral part of Kochi. A short walk from the Fort Kochi beach took us to the Dutch Cemetery. Dutch Cemetery is not a typical tourist spot, but for those who are interested in history, it holds a quiet significance. Dating back to the Dutch period, the graves here reflect a part of Kochi's colonial history. Next up was the Kochi Water Metro. Unfortunately, we didn't had enough time to actually take a ride. So काफ़ी ज़्यादा वॉक करने के बाद में अभी हम लोग टायर्ड हो गए हैं बिकॉज इट्स रियली हॉट एंड ह्यूमिड. तो अभी चलते हैं लंच करने के लिए टू वेरी इंटरेस्टिंग रेस्टोरेंट. इट्स ऑन द शोज़ ऑफ द अरेबियन सी इटसेल्फ. सो बहुत सुंदर व्यू होता है वहाँ का. So we have come to this restaurant called Seagull.
So it is like just on the shore of the Arabian Sea and it has a beautiful view. आप यहाँ पे बैठ के व्यू को एंजॉय कर सकते हो and you can see the ships going. So right now I am in front of Mattancherry Palace. Mattancherry Palace को originally Portuguese ने बनाया था in the year 1555 as a gift to the King of Cochin to strengthen their trade relations with Cochin. And later when Dutch took control of Cochin, they renovated this palace and from that time it is also being known as the Dutch Palace. Inside the Mattancherry Palace, one of the most striking things you'll notice are the murals. The walls are beautifully covered with scenes from the Ramayana and Mahabharata, and honestly, they feel almost alive. You will also find royal artifacts that give you a glimpse into the lives of the Kochi rulers. There are beautifully carved wooden ceilings, traditional Kerala-style architecture, and even royal carriages that were once used by the kings and queens. You'll also see royal costumes, weapons, and portraits of the kings, each piece quietly telling its own story. So Mattancherry Palace से निकलने के बाद है ये टूरिस्ट बोटिंग सेंटर where you can do boating. But अभी हम लोग currently will go to the Jew town, Jew street हम लोग जाएंगे. मट्टनचेरी पैलेस से 350 मीटर दूर है बस ज्यू टाउन. एंड ज्यू टाउन में आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी एंटिक्स की, स्पाइसेस की और सुवेनियर शॉप्स भी यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएगी. बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू गो टू परदेसी सिनेमा विच इज़ इन द ज्यू टाउन इटसेल्फ. So many antique shops are there. Just see next to me सारे brass के and even wooden सारे like antique pieces जो कि home decor के लिए and all you can purchase. And they are also selling like ittar, clothes and everything. Jew Town is one of those places in Kochi that instantly feels different. The narrow streets lined with old buildings and antique shops have a very old world charm. And right at the heart of it is the historic Pardesi Synagogue, which adds even more character to this place. So I'm right now in front of the Pardesi Synagogue. Pardesi Synagogue Jew traders ने बनाया था and since it was majorly for the Jew community इसलिए इसे परदेसी synagogue बोला जाता है because Pardesi means foreigner and it was built in 1568 AD. As you step inside the Pardesi Synagogue, what really stands out are the beautiful details. The grand Belgian glass chandeliers hanging from the ceiling add a timeless old world charm to the space. But the most unique part has to be the floor. Made up of hand painted Chinese tiles, each tile is different from the other, which makes it even more special. And what's even more interesting is that today only a very small number of Jews still live here in Kochi. But places like this continue to preserve their rich history and legacy beautifully.
As you walk through Jewtown, you'll notice these cute little cafes tucked between the old buildings. Alongside them, there are so many spice shops filled with the aroma of fresh spices. It's honestly hard to miss. And now we are going to step into one of those spice shops and pick some authentic spices. How much is this one? 380. This is same variety? Yeah. 380. 100 rupees. How much? Mint tea? Minty 180. So they have all types of whole spices and many types of masalas that you want. So chicken masala, fish masala, butter chicken masala, sambar masala, all of that you will be getting over here. Okay, so I got these spices and I got 2 packets of banana chips. And with that, this is the end of our Kochi journey. Tomorrow we leave this beautiful city, but take back so many memories with us. As I leave Kochi, I realize it's not just about the places I saw, but the feeling this city leaves behind. And that's something I'll definitely take back with me.